As you know that laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. You know, this phenomena, stimulated emission, play an important role. This phenomena, stimulated emission, play an important role to produce high intensity monochromatic radiation. Stimulated emission, this phenomena play an important role to produce high intensity monochromatic radiation. So laser is nothing but high intensity monochromatic radiation. And that radiation is producing by what process? That is by stimulated emission. The laser is nothing but high intensity monochromatic radiation produced by this phenomena, stimulated emission. There are few attractive characteristics of laser light. First of all, directionality. First of all, directionality. What about the directionality of laser light? Laser light is actually highly directional. Laser light is highly directional. Highly directional means low divergence. I'll show that diagram for ordinary light source and laser light source. Laser light is actually highly directional. It means it has low divergence. It can travel much distance without, it can travel long distance without much spreading. Okay, so you can mention that laser light is highly directional. It means they will be basically, that laser is basically low divergence. If you see ordinary torch, if you have an ordinary torch, you have an ordinary torch, this torch is emitting photon or light from source. If you see the diameter of this light beam coming from ordinary source at a distance of 2 kilometers away, at a distance of 2 kilometers away, what we'll see, the diameter of this beam will be around, 2 kilometers. Okay, this is the case of ordinary light source, for example, torch. From the source, if you see that beam diameter at a distance of 2 kilometers, this diameter will be around 2 kilometers. On the other hand, you see that directionality of laser beam, suppose is the source of laser light. Suppose is the source of laser light is emitting light beam. If you measure the diameter of the beam 2 kilometers away from the source, if you measure the diameter of the beam at a distance of 2 kilometers away from the source, the diameter will be less than only 2 centimeters. You can understand now.
है ना, कि इसका डाइवर्जेंस कितना ज्यादा है. द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट emitting from ordinary source is huge. On the other hand, the divergence of laser light is very, very small. It means this directionality of laser light, or you can say that laser light is highly directional. Okay, highly directional means low divergence or low spreading. The reason behind that I'll tell you during the discussion of stimulated emission process. But this is on important characteristics or property of laser light, that it can travel due to this low divergence. It can travel long distance without much spreading. It can travel long distance without much spreading. Even if you have a earth, suppose it's the earth, and if you send that light from laser beam to the moon, the diameter of this laser beam will be only limited to few centimeter. If you send that laser light from Earth's surface to moon, the diameter of this laser beam on the moon surface will be limited to few centimeter. Because of this low divergence, you can use this laser beam as a pointer. Because of low divergence of laser beam, you can use this laser source as a pointer. From Earth's surface, if you send that laser beam on the moon, the diameter will only be limited to few centimeters. So this is on important characteristics of laser light. Okay, second characteristics. That second characteristics is laser light is having a high intensity. It is having high intensity. There are basically two types of laser. One is called continuous wave laser. CW means continuous wave laser. The intensity of continuous wave laser is of the order of 10 to the power 5 watt per centimeter square. And you have a pulse laser also. The intensity of pulse laser is 10 to the power 22 watt per centimeter square. This number is not small. 10 to the power 5 watt per centimeter is actually huge. Okay, but intensity actually लेजर लाइट का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है. दो तरह के लेजर है, दोनों का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. बट इफ यू कंपेयर, pulse laser is having much higher intensity as compared to continuous wave laser. But ये भी नंबर आपका छोटा नहीं है, 10 to the power 5 watt per centimeter square. So you can say that laser light is having very high intensity. You can use this laser beam to make a hole on solid, है ना. जैसे मैंने काफी बार यूज किया हूँ लेजर सोर्स को. एक सॉलिड सैंपल है या सॉलिड सबस्ट्रेट है, अगर लेजर बीम सेंड करोगे तो उस सबस्ट्रेट से आपका क्या एटम इवेपोरेट होकर आ जाएगा. और सामने अगर आप सबस्ट्रेट या एक आपका सबस्ट्रेट रख दोगे तो उस एटम वहां से इवेपोरेट करेगा लेजर बीम, और वो आपका दूसरे आपका सबस्ट्रेट में आप डिपॉजिट कर सकते हो. इतना पावरफुल है. But nobody asked what is continuous wave laser and what is pulse laser. So if you see that intensity spectrum of continuous wave laser with time, and you have a pulse laser intensity with time. This side you have a intensity and x-axis noted as time. So continuous wave laser means what? It is emitting continuously with source.
इसका इंटेंसिटी आपका कम होगा, बट टाइम के साथ सोर्स से हमेशा कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है। बट पल्स लेजर में क्या होता है, कुछ टाइम कुछ ड्यूरेशन तक आपका लेजर लाइट इमिट होगा, कुछ ड्यूरेशन मतलब कुछ नैनो सेकंड तक, फिर कुछ नैनो सेकंड के लिए बंद हो जाएगा, फिर कुछ नैनो सेकंड के लिए आपका शुरू होगा, बंद होगा। यानी एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में क्या होगा, लेजर लाइट इमिट होगा बस। बट इसका इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस वेव लेजर। Okay, so this is the intensity or power spectrum of pulse laser with respect to time, and this is the intensity or power spectrum of continuous laser with respect to time. So intensity और आप power भी बोल सकते हो इसको, कि power भी आपका क्या होगा, continuously आपको power मिलेगा from continuous wave laser, but for pulse laser you will get power for certain interval of time. 5 नैनोसेकंड मिलेगा, फिर कुछ टाइम नहीं मिलेगा 5 नैनोसेकंड, and so on. सर पल्स में पावर ज्यादा क्यों होता है फिर एज कम्पेयर पल्स टू में इसीलिए कंटिन्यू? ज्यादा हो रहा है क्योंकि आप स्टोर कर रहे हो ना फोटोन। लाइट मतलब क्या है आपका, बेसिकली फोटोन है, राइट। अब यस। पल्स मतलब आप शटर को बंद करके उसको फोटोन को स्टोर कर रहे हो कैविटी के अंदर, है ना। तो यस सर। हाँ, अगर फोटोन ज्यादा स्टोर होगा और सडनली खोल दोगे तो ज्यादा पावर निकलेगा ना। और अगर कंटिन्यूअसली आपका शटर ओपन है तो फिर कंटिन्यूअसली फोटोन इमिट होता जाएगा, तो स्टोरिंग अमाउंट ऑफ फोटोन स्टोर क्या होगा, पल्स में बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए कुछ फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपका कैविटी है, कैविटी में क्या कर रहे हो, फोटोन को स्टोर कर रहे हो। और उसका कुछ फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर मिरर होता है, उससे निकलता है लेजर आउट। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या है, कि हमेशा आपका निकल रहा है। अगर पास में मतलब कुछ टाइम क्या कर रहे हो, आप शटर को बंद कर रहे हो, इसका मतलब उस टाइम आपका पावर नहीं निकल रहा है, हालांकि वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है कैविटी के अंदर। तो जैसे खोल दोगे उसको तो क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन कुछ परसेंटेज निकालता है, तो वो परसेंटेज ज्यादा होगा ना, इसीलिए। ओके सर। Next you have a spectral purity. Third property of laser light is spectral purity. Spectral purity is noted as delta lambda. That is for a laser light, that is 10 to the power minus 6 angstrom. Ideally मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए डेल्टा लैम्डा कितना होना चाहिए जी? अगर जीरो। exactly it should be 0, right? But 10 to the power minus 6 angstrom, can you imagine? Angstrom means 10 to the power minus 10, है ना? So it means that delta lambda for laser light is around 10 to the power minus 16 meter. So from here you can infer that laser light is what? It is almost monochromatic. Monochromatic. Why? Because this number is almost tends to 0. Ideally it should be 0, but for laser light is 10 to the power minus 16 meter. That you can think that is tends to 0. From here you can say that laser light is almost monochromatic. Okay. The spectral purity means what, sir? Spectral purity means what? If you see that, if you plot that intensity versus wavelength, for ordinary light it will be like a broad spectrum. You will get many intensity for different मतलब जो आउटपुट आपको मिलेगा, हाँ, आउटपुट जो मिलेगा वो बहुत सारे वेवलेंथ इसमें पॉसिबल होगा। बट ये दिस इज द केस फॉर ऑर्डिनरी केस, इज द ऑर्डिनरी लाइट। बट आपका लेजर के लिए देखोगे तो फिर क्या होगा, आपका जो ये इंटेंसिटी मिलेगा आपको आउटपुट में, दैट विल बी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ। ऑर्डिनरी केस के लिए बहुत सारे वेवलेंथ आपको मिलेगा, और लेजर के लिए क्या होगा, आपका कुछ लिमिटेड मिलेगा। स्पेक्ट्रल प्यूरिटी मींस फुल विथ एट हाफ मैक्सिमा। डेल्टा लैम्डा मतलब क्या है, फुल विथ एट हाफ मैक्सिमा। हाफ मैक्सिमा मींस इंटेंसिटी जहां पे हाफ है मैक्सिमा का।
that will be your 10 to the power minus 6 Armstrong. ठीक है, ऑफ कोर्स ये पीक आपका क्या होगा, ये आपका बहुत ही ज्यादा ये होगा, इंटेंसिटी होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी केस, ठीक है ना। ऑर्डिनरी की कंपैरिजन में आपका इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है जो लेजर बीम होती है। तो ये आपका बेसिकली किसका है, आपका ये जो स्पेक्ट्रम है, दिस इज फॉर लेजर, दिस इज फॉर लेजर, ठीक है जी। Yes, sir. Now to understand the production of laser light, we must need to understand the phenomena of interaction of EM wave with matter. To understand the production of laser light, we must need to understand the phenomena of interaction of EM wave with matter. Phenomena of interaction of EM wave with matter. So first of all, you have spontaneous emission. Spontaneous emission. So to understand this, let us take two energy levels. E1 with population N1, E2 with population N2. And let us take the lifetime of upper level, that is tau. Or you can take tau means spontaneous lifetime of upper level. है ना, अपर लेवल का जो लाइफ टाइम होती है, that is noted as spontaneous lifetime of upper level. Now there are n2 number of atoms at E2, n2 number of atoms per unit volume at level E2, and there are n1 number of atoms per unit volume at E1. Now what will happen, every system want to stay in ground state, right? So it will happen that when atoms will make transition from E2 to E1, there will be emission of photon. There will be emission of photon. There will be emission of photon. And this process happens spontaneously without any external source is required for that. ये आपका spontaneous process है, right? Or natural process. That's why it's called spontaneous emission, because there's an emission of light here and that process is happening spontaneously. But remember, ये जो आपने लाइफ टाइम अपने लिखे हो, लाइफ टाइम ऑफ अपर लेवल, इसका मतलब ये नहीं है कि टाउ एसपी टाइम में सारे एटम्स यहां से यहां आ जाएगा। मतलब कहने का पर्पज यही है कि टाउ एसपी टाइम में ऐसा नहीं कि जैसे टाउ एसपी हो गया और सारे एटम उसी टाइम सारे वापसी आएगा, ऐसा नहीं है। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे मैं लेता हूँ ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ मानो 65 ईयर्स। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 65 ईयर्स में ही सारे एक्सपायर होंगे, कुछ आपका 1 साल में होंगे, कुछ 2 साल में, कुछ 10 साल में, 15 साल में, है ना, 20 साल, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो केस उस तरह की है, जैसे मैंने इसका लाइफ टाइम इस लेवल का टाउस पे लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एटम्स उसी टाइम वापसी आएंगे। कुछ अभी आया है, फोटोन इमिट किया है ना, कुछ आपका कुछ नैनो सेकेंड बाद निकलेगा, है ना। So photon emitted by, कहने का पर्पस यही है, photon emitted by spontaneous process, they are actually random in time. In fact, they are random in direction also. ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में आपका फोटोन इमिट तो होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका दे आर रैंडम इन टाइम, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया हूं कि ऐसा नहीं कि 65 इयर्स में सारे एक्सपायर होंगे, तो यही बात यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि टाउ एसपी टाइम में सारे एटम सबका वापस आएगा, कुछ अभी आएगा, कुछ नैनो सेकंड बाद कुछ और आएगा, कुछ नैनो सेकंड बाद और कुछ आएगा, इस वे में आपका इमिट होगा। और फोटोन जो इमिट होगा वो आपका रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा।
और आपको पता है कि जब इस तरह की केस है, इसका मतलब क्या है, जो फोटोन इमिट हो रहा है, फोटोन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब इस तरह की वेव जब क्रिएट हो रहा है, दे आर रैंडम इन टाइम एंड रैंडम इन डायरेक्शन, तो इसमें क्या है, दे डू नॉट हैव एनी फाइनाइट फेज कोरिलेशन। एक दूसरे फोटोन के साथ कोई फेज का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फेज का जब रिलेशन नहीं है तो फिर क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, दोनों का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, 2 पाई इस तरह से होना चाहिए। इस तरह के केस में आपका कभी पॉसिबल है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना? नो सर। नो पॉसिबल है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका एम्पलीफाई होता है। जैसे दो साइन वेव, दो वेव्स मानो, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर ए है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, राइट? यस सर। और इंटेंसिटी भी क्या होगा, इंटेंसिटी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, बेसिकली एम्पलीट्यूड बढ़ता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, वेव का इंटेंसिटी भी बढ़ता है। बट यहाँ पे वो केस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका फोटोन जो इमिट हो रहा है उसके बीच में कोई फेज का कोरिलेशन नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे स्पॉन्टेनियस इमिशन इंटेंसिटी को बिल्ड करने के लिए हेल्प कर सकता है, नहीं कर पाएगा। तो यू कैन मेंशन that spontaneous emission can never build up any intensity of laser light. Spontaneous emission process होगा ही होगा, बट ये कभी इंटेंसिटी को बिल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि फोटोन का जो प्रॉपर्टी है दैट्स नॉट बिलोंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So intensity can never build up by spontaneous emission process. ये प्रोसेस होगा, फोटोन भी इमिट होगा, बट इंटेंसिटी बिल्ड नहीं होगा। नाउ दैट rate of spontaneous emission dN2 by dt ये किसके प्रोपोर्शन टू होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, लैम्डा N2 पर डिपेंड्स ऑन, जितना N2 होगा उतना ही ज्यादा आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस होगा। अगर N2 है ही नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एटम्स है ही नहीं, तो आपका प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना नंबर ऑफ एटम्स E2 पर होगा उतना ही ज्यादा आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। तो डिपेंड्स अपॉन N2। Okay, so this is your first case. Then you have a second case or second phenomena, that is stimulated absorption. That is stimulated absorption. Again, let us draw these two levels, E1 with population N1, E2 with population N2, and their separation between these two levels noted as delta E equals to H cross omega naught. And the atoms here. Now, if you sign a photon, here also you'll have atoms, right? यहाँ पे भी आपका atoms है N1 number, वहाँ पे N2 है. Now, if you sign a photon having suitable energy H cross omega naught, this energy should be matched with this energy gap. If you sign a photon having suitable energy H cross omega naught, suitable means what? That energy should be matched with energy gap between E2 and E1. Then atoms sitting at the ground state or atoms sitting at E1 will absorb this photon and will pump to excited level E2. And this phenomena is happening when you're sending the photon from external source.
This process is called stimulated absorption. Remember, in stimulated absorption at the output, you do not have any photon. So when you shine a photon having suitable energy matching with the energy gap between E2 and ion, atoms sitting at ground state will absorb this and will go to excited state. As a result, at the output, you do not have any photons yet. So again, this stimulated process or stimulated absorption can never helps to build up intensity. है ना? जब आपका आउटपुट में कोई फोटोन है नहीं, हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है. So stimulated absorption can never help to build up intensity of laser light. ठीक है ना? Because output में क्या है, आपका कोई फोटोन है नहीं. फोटोन जो आ रहा है, that is absorbing. It means that stimulated absorption can never help to build up intensity. And the rate of stimulated absorption dN by dt st dot abs. st dot abs means stimulated absorption. That will be proportional to what? किसके ऊपर depend करेगा? N1. That will depends upon N1. और बाहर से अपने फोटोन नहीं सेंड किया तो फिर कहां से होगा? That depends upon that photon coming from external source, right? So obviously that depends upon the energy density of incoming EM radiation. U omega means energy density of EM radiation. अगर बाहर से आपने फोटोन साइन किए ही नहीं तो फिर कहां से प्रोसेस होगा? So rate of stimulated absorption depends upon number of atoms sitting at ground state as well as the energy density of incoming EM radiation. But remember, this process is also not helping to build any intensity. So because of random direction, it is not able to build intensity. हाँ जी. रैंडम इंटेंसिटी बिल्ड करने के लिए आपको आपका कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, है ना? जब आपका रैंडम है, सो दे विल नेवर इंटरफेयर कॉन्स्ट्रक्टिवली. दैट्स अ प्रॉब्लम. Because of their randomness. And next process is called stimulated emission. Next phenomena that is called stimulated emission. This is called stimulated emission. Again, you have two levels, E1 with N1, E2 with N2. Now if you shine a photon having suitable energy H cross omega naught, that is matching with this energy gap. Here the energy gap equals to H cross omega naught. And what will happen? The atom sitting at ground state. So under the presence of this incoming photon, this photon will shake this atom. So कैसे समझोगे? This incoming photon will shake this atom. This will shake this atom. As a result, this atom will forced to come to the ground state, है ना? So as a result, ये तो आपका incoming photon आपके पास एक थे ही, और जब आपका atoms excited state से ground state पे आएगा तो एक और photon emit होगा. So under the presence of this incoming photon, these atoms will shake. कैसे समझोगे? जैसे आपका समझ मतलब पेड़ में फ्रूट लटका हुआ है और इसको सेक करोगे, फिर क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, राइट? तो ये आपका जैसे फ्रूट है, इस सेकिंग, सो आपका नीचे ग्राउंड पे गिर गया. जैसे गिरा है, एक आपका फोटोन इमिट हो गया और आपके पास एक ऑलरेडी फोटोन था, है ना? जैसे इसको कैसे समझोगे? सपोज मान लो एक आपका पोल है,
और पोल के ऊपर सपोज मान लो एक बॉल को आपने रख दिया, है ना, बड़ी मुश्किल से ऊपर रख दिया एक बॉल को, और किसी ने एक फोटोन आ रहा है, सपोज मान लो फोटोन नहीं, कोई लोग पर्सन आ रहा है, और पर्सन आके क्या कर दिया, इस पोल को हिला दिया, फिर क्या होगा, हिला दिया तो फिर आपका बॉल गिर जाएगा, राइट? समझे कि नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. So what is happening, this incoming photon is shaking this atom. As a result, this atom is jumping to ground state. When it's jumping to ground state, it is emitting a photon. एक आपका फोटोन इमिट हो रहा है जब आपका एटम का जंप हो रहा है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट. So incoming photon is shaking this atom. As a result, it is forced to come to ground state. When it is coming to ground state, it is emitting on photon. और आपके पास ऑलरेडी एक फोटोन थे. So at the output you can see how many photons are there. जब एक फोटोन इनकमिंग थे, कितना आउटपुट में मिल रहा है आपको फोटोन्स? दो फोटोन्स मिल रहा है, राइट? So this process, this incoming photon stimulate this process. That's why it is called stimulated emission. Okay. So Sir, remember, this incoming photon cannot go to N1. हाँ जी, So incoming photon cannot go to N1. दो प्रोसेस ही पॉसिबल है जी. Okay. आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है और स्टिमुलेटेड इमिशन भी पॉसिबल है. अब रेट डिपेंड करेगा कि कितना N2 है और कितना N1 है. Oh. समझे? Okay, sir. स्टिमुलेटेड जैसे इनकमिंग फोटोन आ रहा है तो आपका दोनों का प्रोबेबिलिटी जो है सेम है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड इमिशन. बट रेट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स N2 E2 पे कितना है और नंबर ऑफ एटम्स N1 पे कितना? N1 पे कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. बट प्रोसेस समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि कैसे समझोगे इस प्रोसेस को, कि जब इनकमिंग फोटोन आ रहा है, दिस इनकमिंग फोटोन विल स्टिमुलेट दिस एटम, सो इट इज फोर्स्ड टू कम टू ग्राउंड स्टेट. During that process, there will be emission of photon, and you have another photon. You have already on photon. So there's these two photons. At the output, these two photons are produced. ये sentence बड़ा important है. These two photons are produced at the same time, at the same position. So how much phase difference will be there? Zero. These two photons, if you remember that, कोई साइन वेव को कैसे डिफाइन करते हो आप? E naught then sin of kz minus omega t if it is traveling along z direction, right? If these two photons are produced at the same time, this is called phase, right? This is called phase. If these two photons are produced at the same time, t is fixed. Frequency तो fixed होगा क्योंकि दोनों का frequency same ही होगा, incoming photon, right? Agree or not? At the same position, z is fixed. So इन दोनों का बीच में phase difference कितना आएगा? जीरो आएगा. तो जब phase difference जीरो होगा फिर क्या होगा? They will interfere constructively. जब constructive interference क्या होगा फिर क्या होगा? आपका amplitude amplify होगा. और जब आप amplitude amplify होगा फिर क्या होगा? आपका intensity भी बढ़ेगा, क्योंकि intensity is nothing but amplitude का square, right? So in stimulated process, the photons are produced at the same time at the same position, so they will interfere constructively. As a result, there will be amplification of amplitude that leads to increment of intensity. That's why it is called stimulated emission can build up the intensity. सर इसमें जब एटम जब ग्राउंड स्टेट में आता है तब फिर से रैंडम डायरेक्शंस में नहीं देगा क्या वो फोटॉन्स, जैसे पहले केस में था? नहीं, यहाँ पे आपका रैंडम डायरेक्शन में नहीं होगा आपका. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन. ये फोटोन जो आ रहा है, ठीक है ना, ये स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस में क्या होगा, ये फोटोन जब स्टिमुलेटेड प्रोसेस करेगा, जब आपका एटम जंप करेगा, ठीक है ना, तो ये जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांजिशन के कारण जो फोटोन इमिट हुआ है, इट इज फोर्स्ड टू ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. व्हाई आई एम टेलिंग दैट? क्यों रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ. क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एट द सेम पोजीशन. रैंडम डायरेक्शन में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा किया. ये आपका सेम पोजीशन में प्रोड्यूस हो रहा है एट द सेम टाइम. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, दिस टू फोटॉन्स एंड देयर वेव फंक्शन क्या होगा,
their wave function will be overlapped. दोनों फोटॉन्स का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा. जब दोनों वेव फंक्शन ओवरलैप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इट विल रिप्रेजेंट ए सिंगल वेव फंक्शन, एक सिंगल वेव फंक्शन की तरह बिहेव करेगा. इट विल बिहेव एज ए सिंगल वेव फंक्शन. अब आपको पता है कि सिंगल वेव फंक्शन कैन नेवर ट्रैवल इन टू डिफरेंट डायरेक्शन. एक सिंगल वेव फंक्शन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता. So they are produced at the same time and same position. That's why their wave function are overlap. It means they are representing a single wave function, and a single wave function can travel only in a single direction. That's why laser light has no divergence. क्योंकि उनका wave function क्या हो जाता है, overlap हो जाता है. Clear है जी? Yes sir. Voice is not it's not audible. Can you please So, am I audible now? it's not is audible. Can you please message? Why two photons you are saying now? So on you have incoming photon, right? एक आपका incoming photon आ रहा है. This incoming photon is shaking your atom. तो atom जैसे आपका यहाँ पे है, तो atom तो यहाँ पे जो excited state में है, ये तो आपका इस photon को absorb नहीं कर रहा है. Actually this photon, इस photon का काम क्या है, इसको shake कर रहा है. तो जब shake करेगा फिर ये आपका atom आपका ग्राउंड स्टेट में गिर जाएगा. जैसे गिरेगा फिर क्या होगा, आपका एक फोटोन प्रोड्यूस होगा और एक आपके पास ऑलरेडी फोटोन थे, इसीलिए टू फोटोन्स. एक आपका इनकमिंग फोटोन है और एक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट में होने के कारण एक फोटोन और प्रोड्यूस हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स टू फोटोन्स. ओके, ठीक है ना जी. नाउ ये बताओ कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा. हाँ जी बताओ. N2 and U. Exactly, dN2 by dt stimulated emission that depends upon N2 as well as E of omega. ठीक है. अब आपका लेजर लाइट है, आपको सबसे ज्यादा प्रोसेस क्या चाहिए. देखो आपका रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन जितना है, ये भी आपका इनकमिंग फोटोन के लिए हो रहा है ना. आप तो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो तो नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है. स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो N2 को लेके. N2 को आपको बढ़ाना पड़ेगा. स्टिमुलेटेड इमिशन आपको ज्यादा करने के लिए आपको क्या ज्यादा करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू इंक्रीज द N2 ज्यादा करना रेट ऑफ पड़ेगा. स्टिमुलेटेड इमिशन, जो आपको करना चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको N2 को ज्यादा करना पड़ेगा. मैं यू ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है STABS, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, N ऑन यू ओमेगा. तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी अनवांटेड है. ठीक है ना. तो बेसिकली आपको सबसे लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये फेनोमेना ज्यादा चाहिए, राइट. तो ये फेनोमेना ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N2 में ज्यादा. N2 आपको ज्यादा करना पड़ेगा और N1 को कम करना पड़ेगा, तभी आपका लेजर लाइट प्रोड्यूस होगा. क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन आपका इंटेंसिटी बिल्ड कर रहा है. तो बेसिकली N2 आपको ज्यादा करना पड़ेगा लेजर लाइट के लिए. N2 should be greater than N1. This is called what? This condition is called what? Population. This condition is called population inversion. आप लोगों ने पढ़ा होगा, right? This is called population inversion. ठीक है ना जी. Now you have a Einstein coefficient. Einstein coefficient.
So as you have seen, you have a two levels again. I have to draw many times. E1 with E1 E2 with N1 N2. E1 E2 with N1 N2. Now, if you remember that rate of spontaneous emission क्या होती है? Rate of spontaneous emission proportional to what? क्या होती है? Spontaneous emission का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? N2 के ऊपर, राइट? Rate of spontaneous emission you can mention here also. Rate of spontaneous emission. That's the incoming photon also, no? हाँ जी Incoming हाँ photon. वो तो N2 आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म. अभी मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने पढ़ा होगा. मैं जस्ट यहाँ पे रेट लिखूंगा और आइंस्टाइन कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस बताऊंगा. ठीक है ना जी. प्रोसेस तो आपने पढ़ लिया ना, स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड मिशन, स्पॉन्टेनियस मिशन और एब्जॉर्प्शन. प्रोसेस तो आपने पढ़ लिया. अब मैं बताऊंगा कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है लेजर लाइट में. रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन है ना. इसका मतलब क्या है कि dN2/dt ये कितना होगा आपका -A21 N2. जहां पे A21 को क्या बोलते हैं हम? A21 को क्या बोलते हैं हम? आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन. और इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? Number of atoms. Because time. Exactly. With progressive time, that spontaneous emission process decreasing the population of level E2. That's why you are taking minus sign. The minus sign means with progressive time, the spontaneous process decreasing the population of E2. So this is the rate of spontaneous emission. ठीक है ना? Now rate of stimulated emission क्या होगी? Rate of stimulated emission क्या होगी जी बताओ? So dN2 by okay. I forgot to derive something. Please let us derive. Then it will be good. Then what is actually tau? Tau क्या है वो हमको डिफाइन करना बहुत बड़ा जरूरी है. जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, जो tau sp लिख रहे थे हम. So as you have seen that dN2/dt spontaneous process के लिए क्या होती है? -A21 N2, right? In spontaneous emission की बात चल रही है अभी, है ना? So it means if you rearrange it, dN2/N2, that will be -A2 dt. Now, if you integrate both sides, at time t equals to 0, let us take that number of population at E2. At E2, when time t equals to 0, the number of population is N2 0. And at time t equals to t, that population is N2 t. Now, if you integrate it, so you'll have ln क्या जाएगा यहाँ पे बताओ? N2 t by N2 0, right? And then you have minus A21 t, right? Now, if you apply that property of natural log, so you'll get N2 t by N2 0. That will be equals to e the power minus A21 t, which implies that N2t that is nothing but N20 into e the power minus A21 t, right? Now, if you see that nature of curve, so you have t this side and this side you have a N2t. So the nature of curve will be like this, right? So at time t equals to 0, obviously that population will be maximum at E2, and with progressive time there will be exponential decay of
n2. But remember that exponential function can never be 0. It is d at 0, this function n2 will be 0 at infinity time, and that is not physically significant. Exponential function can never be 0. It will be 0 at infinity. That is not physically significant. Now, what is tau sp actually? Tau sp is defined. So at t equals to tau sp, actually that n2 becomes n2 0 by e. This is the definition of tau sp. So at spontaneous lifetime, population of E2 will be reduces to 1 by e times of its initial value. So it means at t equals to tau sp, what will happen? This population will be how much? This will be how much? This will be n2 0 by e. Now I can find that what is actually spontaneous lifetime. So as I have seen that I can write that n2 0 e the power minus a2 on tau sp, that will be actually n2 0 by e. क्या हम नीचे का e को इस way में लिख सकते हैं ना, e the power minus on n2 0 by e. You can bring in the upper side, then you will have power minus on. This will be cancelled and you can compare their power, right? It means if you compare them, you will get tau sp, that is nothing but 1 by a2 e. on. तो दिस इज द डेफिनेशन. ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए, काफी ज्यादा यूज होती है लेजर का, कि tau sp अगर आपको आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन पता है, यू कैन फाइंड आउट द लाइफ टाइम ऑफ लेवल. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ये आपका एग्जाम में इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूज होती है काफी. ठीक है ना जी. So this is about your spontaneous emission. This is about your spontaneous emission. But similarly, if you define the rate of stimulated emission, if you define that rate of stimulated emission, can you please write and tell me? So I can define like this: dn2 by dt. That will be how much g? बताइए, proportional to n2 u of omega, right? It means you can mention like this: STEMS. It means basically dn2 by dt. That will be how much? That will be minus b2 on n2 u of omega, where b2 on is called Einstein coefficient of stimulated emission. Einstein coefficient of stimulated emission. Okay, so basically spontaneous emission and stimulated emission basically representing downward transition. Downward transition means from upper level to lower level. And then you have rate of stimulated absorption. Rate of stimulated absorption. So that stimulated absorption rate you can mention n on dn on by dt. That is proportional to n on u of omega, right? It means that dn on by dt, that will be how much? Minus b on 2. Again, that minus sign का मतलब क्या है? That phenomena basically decreasing the population level
population of that level. जैसे stimulated emission में जो आपका minus sign आया है, that representing that stimulated emission basically decreasing the population of E2 level. Similarly यहाँ पे जैसे आप stimulated absorption की बात कर रहे हो, यहाँ पे minus B on 2 N on U omega. So again, that stimulated absorption basically decreasing the population of level U1. That's why you are taking minus sign. So the stimulated absorption basically decreasing the population of level E1. That's why you are taking minus sign. Where that B on 2 here is called Einstein coefficient of stimulated absorption. Einstein coefficient of stimulated absorption. And basically stimulated absorption representing the upward transition. Why? Because atoms are going from lower state to higher state. Now at thermal equilibrium, what will happen? At thermal equilibrium, what will happen? At thermal equilibrium, the rate of upward transition will be same as the rate of downward transition. You can mention at thermal equilibrium, the rate of upward transition will be same as the rate of downward transition. It means at thermal equilibrium, rate of upward transition means the process of or rate of stimulated absorption N on U of omega. So this is the rate of upward transition, right? And rate of downward transition means sum of stimulated emission, sum of rate of stimulated emission and spontaneous emission. That will be minus B2 on N2 U of omega minus A2 A2 on N2, right? into Right. Now if you bring first of all you minus जो minus है, if you multiply both sides by minus, so every minus will be cancelled and it will be plus. Now if you bring this term on the left hand side, you will have U of omega common, right? And then B on 2 N on minus B2 on N2, that will be equals to A2 on N2, right? Which implies the energy density of EM wave, that will be how much? It will be A2 on N2 divided by B on 2 N on minus B2 on N2, right? Now if you take from denominator, if you take B2 on N2 common, if you take B2 on N2 common, so you'll have A2 on N2 divided by B2 on N2, then B on 2 by B2 on, right? N on by N2 minus on. N2 cancel होता है. Exactly, N2 will be cancelled here, right? N2 will be cancelled. Now, can you please tell me what is the ratio of N1 by N2? So suppose you have two energy levels, again E1 and E2. E1 and E2 with population N1 and N2. Now, if you apply that Maxwell-Boltzmann distribution law, suppose the separation is H cross omega. If the separation between E2 and E1, that is H cross omega, if you apply that Boltzmann distribution law of population, so N1 by N2 will be how much actually? To the power h cut omega by kt minus 1. Exactly, it will be e to the power H cross omega by kVt, right? This will be the ratio of population between Yes. N1 by N, right? Now we substitute it there, what will happen? We'll have U of omega that can be written as A2 on by B2 on, and then you have B on 2
by B21, then N1 by N2, that will be H cross omega by KBT minus on, right? So you are correct, Sahil. This I think you are trying to say. Now, Yes, sir. from Planck radiation law, the energy density of EM radiation U of omega is actually how much? From Planck radiation law, so it's like H cross. This is you are deriving from your laser rate equation, right? Now, according to the Planck's law, the energy density of EM radiation, that is nothing but H cross omega cube by pi square VQ, where V is the speed of light in medium, so V can be written as C by N naught if the medium having refractive index N naught. And of course, यहाँ पे एक factor मैंने missing किया, that is what? That is your on by e the power H cross omega by KBT minus on. So according to Planck's distribution law, this is the energy density of EM radiation. ये आपका ओमेगा की फॉर्म में है. अगर आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखोगे प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो आपका यू न्यू है, जैसे ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखोगे, ये क्या होती है बेसिकली 8 पाई H nu cube by C cube. न्यू क्यूब बाई, अगर मीडियम लोगे, मीडियम में फोटोन का स्पीड कितना होता है? v होता है, राइट? Yes. सो दिस विल बी v क्यूब डिवाइड बाय e द पावर h न्यू बाय kt माइनस ऑन. K means KBT, right? अगर सपोज मान लीजिए इसके साथ अगर इसका कंपेयर करेंगे, if you compare these two, if you compare this equation with this equation, can you please tell me what will be actually A21 by B21? अगर इन दोनों का कंपेयर करोगे, यहाँ से A21 by B21 कितना आएगा एक्चुअली? That will be 8 pi nu cube by v cube. H cross omega cube by pi square V cube, right? और V जो है that is your V is nothing but C by N naught. ठीक है ना? और आपको क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे क्या है? e the power this into on, so b1 by b2 is actually how much? b1 by b2 actually on. इसका मतलब क्या है? b1 means probability of stimulated absorption equals to probability of stimulated emission. b1 equals to b2 means what? Probability of stimulated absorption is equals to probability of stimulated emission. अगर न्यू की फॉर्म में अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर यू सपोज मान लीजिए ये है और आप न्यू की फॉर्म में अगर कंपेयर करेंगे आप इसको, तो आपको क्या मिलेगा? यहां से बताइए जरा, A21 B21 क्या मिलेगा इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे आप? 8 pi h nu cube. एग्जैक्टली, यहाँ से आपको मिलेगा 8 पाई h न्यू क्यूब बाई v क्यूब मिलेगा. ठीक है ना? तो अगर न्यू की फॉर्म में आपको पूछा गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, H क्रॉस ओमेगा के फॉर्म में ये वाला यूज करोगे. अब मैं इसको लेके एक्चुअली समझूंगा कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट का क्या सिग्निफिकेंस है. वैसे तो हमने डिराइव किया काफी बार, है ना, काफी हमने पढ़ा भी है, बट व्हाई आइंस्टाइन कोफिशिएंट इज सो सिग्निफिकेंट, व्हाई इट इज नीडेड इन लेजर फिजिक्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So as you've seen, you have two levels, right? You have two levels, E on E2 with population N on N2, right? And the separation delta E equals to H cross omega. Now I've seen that A2 on by B2 on, that I have observed, that is H cross omega cube by pi square V cube, where V equals to C by N naught. यहाँ पे N naught है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या मैं इसको इस में लिख सकता हूँ कि H क्रॉस ओमेगा की क्यूब डिवाइड बाय H क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर V क्यूब लिख सकता हूँ, राइट? कोई डाउट नहीं इसमें, राइट? H क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो H क्रॉस ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर? टेल मी, यस और नो? नो, राइट? No, sir. No. तो नीचे में h क्रॉस टू द पावर 4 होगा ना? कहाँ से? तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था.
अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी सिखाना पड़ेगा। h क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। यस सर, तो नीचे में h क्रॉस स्क्वायर टू द ये h आपका क्रॉस h टू द क्रॉस नहीं जी, ये आपका पाई स्क्वायर है। ओ ओके सर, ओके सर, ओके। तो इसका मतलब a21 by b21 कितना आएगा बताओ। That will be, can I write this is proportional to delta E का cube? Can I write like this? This H cross omega is the gap between two levels, that is delta E. So A21 by B21, that is proportional to delta E की power cube. Can I write like that? Then no problem, right? Now you see, interesting thing is here. A21 is representing the probability of spontaneous emission. B21 is representing the probability of stimulated emission. और ये रेशियो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा ई की पावर क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी जो दो लेवल्स है इनका सेपरेशन के ऊपर डिपेंड है। आपको लेजर लाइट के लिए क्या चाहिए? आपको B21 ज्यादा चाहिए, A21 कम चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन ही तो आपका मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको A21 कम चाहिए, B21 ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये रेशियो को कम होना चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू दैट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये रेशियो लेजर लाइट के लिए कम होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा चाहिए, ये रेशियो कम होने के लिए डेल्टा ई क्या होना चाहिए? Low. डेल्टा ई शुड बी स्मॉल, डेल्टा ई शुड बी स्मॉल। तो ऐसा कोई मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ऐसा कोई मटेरियल चूज करना पड़ेगा जहां पे जो दो लेवल्स है उनके बीच में आपका सेपरेशन जो है वो कम है। तो B21 रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, A21 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेजर के लिए ये ज्यादा चाहिए, ये रेशियो कम होने के लिए डेल्टा ई कम होना पड़ेगा, एंड डेल्टा इज द एनर्जी सेपरेशन। अब बताओ, जैसे आप मैं कहीं सारे आपको ऑप्शन दूंगा, एक आपका माइक्रोवेव है, देन इंफ्रारेड है, विजिबल है, यूवी है, किस में आपका डेल्टा ई कम होगा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में कम होगा, राइट। तो अगर मैं क्या ये लिख सकता हूं कि जो आपका A21 by B21, A21 by B21 क्या ये मैं लिख सकता हूं कि फॉर माइक्रोवेव इट विल बी स्मॉलर देन infrared, then visible, visible, then UV. it means the intensity of microwave laser will be highest, then intensity of IR, then intensity of visible, then intensity of UV. But you never heard about that X-ray laser. एक्सरे लेजर के लिए रेशियो क्या होगा? ये रेशियो बहुत ही ज्यादा होगा। इसका मतलब वहां पे स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डोमिनेट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपका हाई इंटेंसिटी फील्ड कभी पॉसिबल नहीं है फॉर एक्सरे, और जब आपका दो गैप काफी ज्यादा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू नेवर हेard about X-ray laser, because for X-ray what will happen, spontaneous emission will be dominant over stimulated emission, so it's not possible to produce X-ray laser. If you see that intensity distribution, microwave will have highest intensity, then infrared, then visible, then UV. Okay, how's the time now, son? How's the time? 6:45. 45. 645. Now at thermal equilibrium, please write, at thermal equilibrium, the ratio of number of, at thermal equilibrium, the ratio of number of at thermal equilibrium, the ratio of number of
spontaneous emission at thermal equilibrium, the ratio of number of spontaneous emission to that of stimulated emission at thermal equilibrium, the ratio of spontaneous emission to that of stimulated emission is noted as A21 by B21 Q of omega. क्या मैं इस वे में लिख सकता हूं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन टू दैट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन? क्या इस वे में लिख सकता हूं इसको? नो अच्छा चलो, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है? dN2 by dt, राइट? dN2 by dt is spontaneous emission, right? And that is equal to minus A2 on N2. और stimulated emission d2 by dN2 by dt st EMS, that will be minus क्या होती है B2 on N2 U of omega. क्या अगर मैं ऑन को 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन टू दैट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन मिलेगा? अगर मैं ऑन को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या मेरे को नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन टू दैट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन मिल जाएगा? Yes, sir. तो राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, N2 N2 कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा ये वाला फैक्टर. तो एज यू नो द A21 by B21 क्या होती है एक्चुअली? आपने पढ़ा होगा अभी. 8 जो क्या होती है H क्रॉस ओमेगा क्यूब बाय पाई स्क्वायर V क्यूब होती है. और U ओमेगा क्या होती है? H क्रॉस ओमेगा क्यूब बाय पाई स्क्वायर V क्यूब. और उसके साथ क्या होता है? ऑन बाय होके क्या आता है? फैक्टर आते हैं e दी पावर H क्रॉस ओमेगा बाय KBT माइनस ऑन. जहाँ पे KB क्या है? आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट? तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस रेशियो दैट विल बी e दी पावर H क्रॉस ओमेगा बाय KBT माइनस ऑन, है ना? So this ratio A2 on by B2 on U of omega, that will be actually e the power H cross omega by KBT minus on. और इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी लिख सकते हो. क्या लिखोगे? H nu by KBT minus on. ठीक है ना? H cross को H by 2 pi लिख दोगे तो then we'll have omega by 2 pi and that will be nu, so H nu by KBT minus 1. ठीक है जी. Now at normal temperature for ordinary light source, for ordinary light source omega equals to 3 into 10 to the power 15 second inverse. For ordinary light source omega is how much? 3 into 10 to the power 15 second inverse. Now if you take the temperature 1000 Kelvin, okay, now if you see that A2 on by B2 on U of omega, then it will be e the power H cross is 1.05 into 10 to the power minus 34, right? Then omega is 3 into 10 to the power 15 by KBT. KB is how much? 1.38 into 10 to the power minus 23. And T is your temperature that is given 10 to the 1000. And then you have a minus on, right? अगर इसको calculate करोगे, if you calculate it, you will get that ratio 10 to the power 10. So it means for normal for ordinary light source, the number of spontaneous emission is dominant over stimulated emission, है ना? इसीलिए आप नॉर्मल जो आपका ऑर्डिनरी सोर्स है आपका लेजर लाइट कभी पॉसिबल नहीं है. For ordinary light source omega is 3 into 10 to the power 15, and if we take temperature around 1000 Kelvin, you can see that number of spontaneous emission is hugely dominated over stimulated emission, and that's why it's not possible to have laser light from ordinary light source. अब आपको एक होमवर्क है कि आपको ये कैलकुलेट करनी है कि टेम्परेचर सेम है, कि टेम्परेचर आपका 1000 केल्विन है, ठीक है?
So आपको calculate करना पड़ेगा at what omega that ratio A21 by B21 U of omega that will be on. You have to calculate that. At what omega that A21 by B21 U of omega that will be on. Okay. So Yes, I'll sir. stop here. Tomorrow I'll try to finish that. Okay. Well then, tomorrow we'll meet again. Tomorrow morning. Thank you, sir.